Common base configuration characteristics of BJT. So we will be discussing about the characteristics of BJT in common base configuration. So basically there are two important characteristics. First is the input characteristics and second is the output characteristics. So let us define first the input characteristics. So as we have discussed that earlier so it is a plot of input current versus input voltage at constant output voltage. So let us draw one simple diagram of common base configuration. So this is common base configuration. This is emitter. This is base collector. So to act a transistor, to act a BJT as an amplifier, the input must be forward biased and output must be reverse biased. So this is input, this is output. Input is forward biased, output is reverse biased. So forward bias is NPN transistor. So here it will be negative terminal and it is positive terminal. It is the voltage between base to emitter. So this is forward bias. Output must be reverse bias. It is NPN type and we have to reverse bias it. So here it is positive and here it is negative and the voltage will be VCB. So this is our reference diagram and on the basis of this now we are going to plot the input characteristics. So input characteristics is a plot of input current. So what is the input current? It will be obviously emitter current, i.e. emitter current, that is the input current, versus voltage VBE, input voltage VBE at constant output voltage. Here the output voltage is VCB. So इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक प्लॉट है. जब हम लोग इसका प्लॉट बनाएंगे ना, वोल्टेज वर्सेस करंट प्लॉट करेंगे, तो इनपुट करंट है एमिटर करंट, ये एमिटर करंट इनपुट है, इनपुट वोल्टेज है VBE, कांस्टेंट में रखेंगे आउटपुट वोल्टेज VCB. These curves are also known as base curves of a transistor. So input characteristics of common base configuration are also known as base curves of transistor. Now second is the output characteristics. So it is a plot of output current. Now what is the meaning of output current? Here the output current will be collector current IC. So it is a plot of output current, that is the collector current, versus output voltage. Here output voltage is VCB at constant input current, and here input current is the emitter current. So these curves are also known as
collector curves of a transistor. So these are the two important characteristics of common base configuration of BJT. So I will summarize once again. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग प्लॉट करेंगे इनपुट करंट दैट इज एमिटर करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज दैट इज द बेस टू एमिटर वोल्टेज, यानी ये वोल्टेज वर्सेस करंट. अब यहाँ पे हम लोग ये जो VBE बोल रहे हैं ये एक्चुअली एमीटर और बेस के बीच का जो वोल्टेज रहेगा वो है, ना कि बैटरी का वोल्टेज. हम लोग इसको बैटरी के वोल्टेज को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे VEE, और यहां पे बैटरी का वोल्टेज रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको नाम देंगे VCC. और यहाँ पे जो VCB है यानी ये कलेक्टर से लेके बेस तक का जो वोल्टेज रहेगा उसे हम लोग VCB नाम देंगे. सो वंस अगेन आई समराइज दैट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, इसके जो इनपुट साइड पे जो हम लोग वोल्टेज देंगे इसको हम VEE नाम देंगे, आउटपुट साइड में जो वोल्टेज जोड़ा है उसको VCC नाम देंगे. जो ये सोर्स है उनके नाम ब्लू कलर में लिखे हुए हैं. अब यहाँ पे मैंने लिखा VBE, यानी इस एमीटर से बेस टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो हमें प्लॉट करना है. वैरी करेंगे VEE, सप्लाई वोल्टेज वैरी करेंगे, बट इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिलता है वो हमें मेजर करना है. वैरी करेंगे सप्लाई वोल्टेजेस इनपुट साइड और आउटपुट साइड में, लेकिन एमीटर टू बेस कितना वोल्टेज मिलता है वो हमें मेजर करना है. साथ ही साथ कलेक्टर टू बेस वोल्टेज कितना मिलता है वो हमें मेजर करना है. ये तो हो गया वोल्टेजेस. उसके साथ साथ हमें करंट भी मेजर करना है, ये एमीटर करंट भी मेजर करना है, कलेक्टर करंट भी मेजर करना है. तो हमें चार चीजें मेजर करना है, एमीटर करंट, कलेक्टर करंट, एमीटर से बेस के बीच का वोल्टेज ड्रॉप एंड कलेक्टर से बेस के बीच का वोल्टेज ड्रॉप. सो सबसे पहला है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें हम लोग इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज प्लॉट करेंगे और कांस्टेंट रखेंगे आउटपुट वोल्टेज. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आउटपुट करंट दैट इज द कलेक्टर करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज दैट इज VCB, और कांस्टेंट रखेंगे इनपुट करंट. सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कहते हैं बेस कर्व्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कहते हैं कलेक्टर कर्व्स. अब हम लोग एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे डिटेल में, लेकिन उसके पहले हम लोग एक डिटेल सर्किट डायग्राम बनाएंगे. ये हो गया हमारा एक्चुअल कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अभी हमें इसको डिटेल में इसका सर्किट डायग्राम बनाना है ताकि हम लोग करंट और वोल्टेज मेजर कर सके. सो मैं सर्किट डायग्राम फास्ट ड्रॉ करूंगा. सो हियर आई हैव ड्रॉन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर NPN transistor. I will mention here NPN transistor, and now I am going to connect ammeter, voltmeter, input voltage source, output voltage source, and then our circuit diagram will be complete. So I will be drawing it fast. Here I have drawn input supply VEE, and to make it variable I am using a potentiometer R1. This ammeter actually it is a milliammeter, and it will measure the emitter current. This is a voltmeter. It will measure emitter to base voltage. So this is for the input side. Here I have drawn output side. This is the output voltage we will be giving, that is the reverse bias. Variable we have to make, so I have used a variable potentiometer R2. This ammeter actually it is a micro ammeter because we are going to measure reverse bias current, but
we can use a low range scale milliammeter. So low range means around 10 0 to 10 milliammeter range is sufficient, and for this input side around 50 milliamp is sufficient. So we will be measuring voltage between base to emitter for input side. For output side we will be measuring voltage between collector to base. For input side we will be measuring emitter current. For output side we will be measuring collector current. Input current is the emitter current, output current is the collector current. Input voltage is VEB, output voltage is VCB. Now this is the complete circuit diagram. The very short and sweet circuit diagram, equivalent circuit diagram can be like this. Input voltage, output voltage, and it has to be made variable. So this symbol is for variable. So this is the simplest circuit diagram equivalent of this. This here it will be emitter current, and this ammeter will be measuring the collector current. We don't have to measure base current because it is connected to ground. This voltmeter will measure voltage between VEB, and this voltmeter will measure VCB. So I have made the simplest this circuit, and this is a detailed circuit. And now we are going to make input characteristics. We are going to draw the input characteristics and we will study it in detail. So I will first draw the input characteristics and then I will explain each characteristics. So here I have drawn the input characteristics. So it is a plot of input current, that is the emitter current, versus input voltage, that is the emitter to base voltage. So on the x-axis we have voltage, on the y-axis we have emitter current. Now we have plotted the input characteristics curve. Now this is the graph of input characteristics. Here on the x-axis we have base to emitter voltage, that is this voltage, and on the y-axis we have emitter current, that is this current. Now I have drawn the construction diagram of common base configuration. This is emitter, base and collector. This is NPN transistor. Now if you look at this construction diagram, this is the equivalent, this is a circuit diagram and this is the construction circuit diagram. तो यहाँ पर जो हमारा एमिटर है वो एन टाइप है, बेस जो है पी टाइप है. एन टाइप को नेगेटिव कनेक्ट किया है, पी टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट किया है. इट मीन्स व्हाट? दिस इज अ पीएन जंक्शन and it is forward bias. As n type connected to negative, p type connected to positive, and this is a PN junction, it is acting as a diode. So input side is acting as a diode. So input is acting as a PN junction diode.
So if input is acting as a PN junction diode, it means the input characteristics of this common base configuration will be similar to that of forward biased PN junction diode. So we know in forward bias, N type connected to negative, P type connected to positive terminal of the battery. So to plot the characteristics of the PN junction diode, that is for the emitter to base junction, first we will increase, I will write here, increase the input voltage, that is VEE, in steps of 0.1 volt. This is very important. Step size must be 0.1 volt. Why 0.1 volt steps? Because the diode will get forward bias on 0.7 volts. So we have to increase the input voltage in steps of 0.1 volts and we have to measure VEB. So we have to measure this VEB. Actually we are measuring this. So we have to increase the input voltage in terms of 0.1 volt and we have to measure the VEB. So we keep on increasing VEB, measure it, and also measure input current, that is the emitter current. So vary the input voltage in steps of 1 volt, measure the value of VEB and measure the corresponding input current, that is the emitter current. So if we plot the values of emitter current and base to emitter voltage in steps of 1 volt, we will get this curve. Now one thing we have to mention here, that output voltage must be kept constant, means the value of, we have to vary the VCC such that the VCB must be equals to 1 volt. So यहाँ पे हम लोग को 3 चीजें करना है. पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन, आउटपुट वोल्टेज जो है VCC, इसको वेरी करके हमें VCB वोल्टेज पहले फिक्स करना है. तो इसको वेरी करें, किसे? VCC को वेरी करेंगे, VCB को 1 वोल्ट फिक्स रखेंगे, इसको वेरी करेंगे तभी ये वेरी होगा. So we are keeping VCB equals to 1 volt fix. After that, increase the input voltage. To increase the input voltage, again we have to vary the VEE. To VEE vary and measure the VEB. We have to measure this in steps of 1 volts, 0.1 volts, and measure the corresponding emitter current. Once again I will repeat, keep the output voltage constant for 1 volt, increase the input voltage in the very small step of 0.1 volt, and then measure the value of VEB and IE. So if we keep on plotting, then we will get this kind of curve. Now again we will keep the value of VCB equals to 2 volts or say 5 volts. Then what will happen? This curve will shift inwards on the inner side. Again, if we increase the reverse bias, again this curve will shifting insides. So I will mention here, this is the curve for VCB equals to 10 volts, VCB equals to 5 volts. So what we are observing, if we increase the reverse bias, more current is flowing through the
transistor. More input current is flowing through the transistor. Now, how this is happening? So it is very interesting. Increasing the reverse bias, increasing this reverse bias increases input current. More the reverse bias, more the input current. So what is the interpretation from these curves? More the reverse bias, more the input current. So I will write as reverse bias. This is actually output voltage, that is VEB. As reverse bias increases, input current, that is emitter current, increases. So how this is happening, we will discuss, but before that, let us see what are the points to be noted from these curves. So there exists a threshold voltage or cut-in voltage or knee voltage as indicated from point 0 to A. So from point 0 to A, below which the emitter current is very negligible. The knee or threshold voltage is designated by, we can say, V knee or Vg. So this is the threshold value, and we can also say that to forward bias this junction, PN junction, we require a barrier potential of 0.7 volt. But for the transistor cases, if it is of silicon, we require around 0.5 volts. So voltage at around 0.5 volts, the PN junction of this BJT gets forward bias and the current starts flowing. So before the 0.5 volts, a very negligible emitter current is flowing. So I will repeat in Hindi. पहले हमें इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करना है स्टेप्स ऑफ 0.1 वोल्ट और हमें एमिटर करंट मेजर करना है. नी वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर ऑफसेट वोल्टेज, नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर ऑफसेट वोल्टेज, तब तक बहुत ही कम एमिटर करंट फ्लो होगा. यानी इसका मीनिंग ये है कि इफ वोल्टेज is 0.5 volts, if voltage is less than this, IE is very negligible. If voltage is less than 0.5 volts, IE is very negligible. As voltage is increased above, so better way is to write like this: if voltage is more than 0.5 volts, emitter current increases, because this is our barrier potential in case of the transistors. The barrier potential again reduces. If it is a germanium transistor, the barrier potential is around 0.1 volt. So better to use silicon transistor for better temperature stability. So beyond point A means from this point to this point, for a fixed value of VCB, emitter current increases rapidly. Emitter current is increasing rapidly. It means that the input resistance of this transistor, means the resistance of this PN junction, the resistance of PN junction, let us say Ri, the input resistance of transistor in common base configuration decreases because it is forward bias. This PN junction is forward bias. That's why the input resistance of this PN junction is reducing, and as the resistance is reducing, the emitter current is flowing. Then again, one thing is happening. If the collector to base voltage
collector to base voltage, means this reverse bias is increased above 1 volt. Say let us say 5 volts. The curve shifts upwards, means more current is flowing. This more current is flowing. So this increase in the current, increase in emitter current with increase in reverse bias, that is VCB, it is because of the effect called as base width modulation, also called as early effect. So this is very important phenomena that is observed only in common base configuration, that is the base width modulation, means increase in the reverse bias increases the input current. We will see how it is happening. So we know that now we will focus on how it is happening, how the reverse bias is increasing the input current. So let us consider a transistor. So here again I have drawn the constructional diagram of this common base configuration of BJT. So this junction, this transistor is NPN transistor. From the input side, when the junction gets forward bias, here there is no depletion region. Here no depletion region at this junction. We are discussing base width modulation, means how the width of this base region is changing and how the large current is flowing with the increase in the reverse bias. And that phenomena, that is base width modulation or early effect, we are discussing. So in first case, the input side is forward bias, that is emitter to base is forward bias. N type negative, P type positive. So this junction is forward bias. As the junction is forward bias, there is no depletion region. But the output junction, this junction JCB is reverse bias. Now as the junction is reverse bias, it has depletion region. So here we have the depletion region forming here. Now as we are increasing the reverse bias, say now the effective width of the base has been changed. First case, the actual width is this. This is the actual width of the base. Now I have applied the reverse bias, so the width has been reduced to this. So actual width is remaining same, but the effective width of base has been changed when we have applied the reverse bias. And as the reverse bias is increasing, the width of the depletion region is increasing. Now this base is lightly doped. Therefore, this depletion region, this dotted line region is a depletion region. This depletion region penetrates more into the base. Depletion region penetrates more in base because it is lightly doped. So as the base is lightly doped, it has more of the depletion region as compared to collector, and the effective width of the base has been reduced.
So if we increase again I have increases this reverse bias. So again the width has been changed. So the moral of the story is, as we are increasing the reverse bias, the width of the depletion region is increasing. The width of the depletion region is penetrating more into the base region because the base is lightly doped, and hence the effective width of the base has been changed. Now, as the effective width of the base has been changed, means there is a change or variations in width of base, and this changes or variations in the width of base is called as base width modulation. And how this is happening? This is happening only because of this increase in the reverse bias. As reverse bias increases, the effective width of the base changes, and this change in the width of the base is called as base width modulation. Now, what is the relation between the base width modulation and the more increase in the input current? What is the relation? The relation is very simple. As the width of the base decreases, because of this increase in the reverse bias, it reduces the recombination of electrons and holes, and hence common base current gain increases with the increase in the collector to base voltage. The concentration of the minority carriers in the base also increases, and this increases the emitter current. For extremely large collector voltage, the base width can be reduced to 0, and this phenomena is called as punch through. Punch through. What is the meaning of punch through? Width of the base is reduced to 0. When the width of the base is reduced to 0, when the collector to base voltage is extremely large, and this will cause the breakdown of the transistor. So the transistor must not be operated in punch through region. The transistor will get burned. So point to be noticed is that how the emitter current is increasing because of the reverse bias. Because of the reverse bias, we know that the total current depends upon the input current because of the normal transistor action and because of the reverse bias. First is that as we are increasing the reverse bias, the base is very lightly doped, so the number of carriers will be less. It reduces the chances of recombination of electrons with the holes in the base region, and the common base current gain increases with increase in the collector to base voltage. The concentration of minority carrier within the base region increases, and if the concentration of minority charge carrier increases, the emitter current increases. So point to be noted, the concentration gradient of minority carriers in base increases, and hence IE increases. Why the concentration of minority carriers increases? Because this effective width is getting less and less. Means the concentration is limited to very small area, and hence it will increase the emitter current.
Then we have to calculate the input resistance. What will be the formula for input resistance? The formula for the input resistance will be the, of course, AC resistance we will calculate. So first we will calculate the DC resistance. Input DC resistance, that is VEB divided by IE for DC. Then what is the value for AC input resistance? Change in VEB divided by change in IE. The input resistance is approximately 50 ohms. So this is all about the input characteristics of the common base configuration. So I will repeat again all the process in Hindi language. For the input characteristics, input must be forward bias, output must be reverse bias. Let us consider this diagram, construction diagram. This is the PN junction, N connected to negative terminal, P connected to positive terminal. Input is the emitter current, output is the collector current. Input voltage that we have to measure is the base to emitter voltage. Okay. Now this PN junction is acting as a diode. So when the diode is forward bias, large current is flown. So this curve VCB equals to 1 volt is the emitter current curve when VCB equals to 1 volt. How the characteristics are plot? सबसे पहले हमें VCB को सेट करना है, that is output voltage, this voltage. VCB को सेट करना है 1 वोल्ट पे. उसके बाद हमें इनपुट वोल्टेज है VEB, इसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है 0.1 वोल्ट के स्टेप्स में. सबसे पहले इसको कांस्टेंट रखना है VCB इक्वल्स टू 1 वोल्ट. हम 0 से भी शुरुआत कर सकते हैं, बट पहले हम लोग शुरू करेंगे VCB इक्वल्स टू 1 वोल्ट. फिक्स रखेंगे, उसको वेरी नहीं करेंगे, कांस्टेंट रख के छोड़ देंगे. VEB को 0.1 वोल्ट से स्टार्ट करना है मेजर करने के लिए, और IE हमें प्लॉट करना है. धीरे धीरे VEB को 1.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट इंक्रीज करते जाना है और IE का वैल्यू मेजर करते जाना है. तो हम लोगों ने वही किया. अब हमें पता है कि PN जंक्शन डायोड की जैसे काम कर रहा है. PN जंक्शन डायोड जो है 0.7 वोल्ट पे फॉरवर्ड बायस हो जाता है और उस टाइम पे लार्ज करंट फ्लो होता है. तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही हुआ कि 0.5 वोल्ट पे ही अब यह ट्रांजिस्टर है, इसकी वजह से ये 0.5 वोल्ट के बाद जंक्शन जो है, ये जो जंक्शन एमिटर टू बेस जंक्शन, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है और लार्ज करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है. सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इज दिस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेम एज द PN जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स. दूसरी कंडीशन हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैंने रिवर्स बायस इंक्रीज कर दिया, मीन्स अगर मैंने VCB को इंक्रीज कर दिया से 5 वोल्ट या फिर और इंक्रीज किया 10 वोल्ट, तो ज्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है. अब ये ज्यादा करंट क्यों फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है? तो इसके लिए एक कंडीशन है, दैट इज बेस विड्थ मॉड्यूलेशन. ये एक फिनोमिना है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, इसको अर्ली इफेक्ट भी कहा जाता है. सो जैसे जैसे रिवर्स बायस इंक्रीज करेंगे एमिटर करंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा और जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है वो घटता जाएगा. अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो बेस है उसकी डोपिंग सबसे कम होती है. अब ये कलेक्टर टू बेस जंक्शन, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कलेक्टर टू बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है. यही एन टाइप है, पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, और पी टाइप है, नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है. अब बेस लाइटली डोप्ड है तो इसके कैरियर्स कम रहेंगे. जब मैंने रिवर्स बायस इंक्रीज किया, लाइटली डोप्ड होने की वजह से डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो बेस में ज्यादा पेनिट्रेट होगा एज कंपेयर टू कलेक्टर. तो उसकी वजह से जो बेस की जो विड्थ है वो रिवर्स बायस देने की वजह से और कम होते जाएगी. सो जैसे जैसे रिवर्स बायस इंक्रीज होगा, इफेक्टिव बेस का जो विड्थ है वो कम होगा.
फिजिकली उसका विड्थ चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इफेक्टिव विड्थ है वो चेंज होगा। क्यों? बाकी का एरिया जो है वो डिप्लीशन रीजन ऑक्युपाई कर रहा है। जैसे जैसे रिवर्स बायस इंक्रीज किया धीरे 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 धीरे, तो ये जो है बेस का विड्थ चेंज हो गया, मीन्स उसके जो कैरियर्स है वो और पास पास आने लग गए। तो एमिटर करंट फास्ट रिकंबाइन होगा क्योंकि उसको कैरियर्स और मिल रहे हैं, फास्ट मिल रहे हैं, एक्युमुलेशन मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है इतनी सी जगह पे। जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया सडनली इस जगह पे, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है एमिटर से वो फास्ट रिकंबाइन होंगे होल्स के साथ, और उसी के साथ माइनॉरिटी कैरियर्स का भी रिकॉम्बिनेशन होना चालू हो जाएगा। तो एक साथ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स दोनों एक साथ रिकंबाइन हो रहे हैं, और उसके वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है माइनॉरिटी कैरियर्स का वो बेस में इंक्रीज हो रहा है, और उसके वजह से हमारा एमिटर करंट सडनली इंक्रीज हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बेस की इफेक्टिव विड्थ है वो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, तो सडनली बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, एमिटर करंट। और बेस की विड्थ जो जीरो करना है मीन्स हमें लार्ज रिवर्स बायस अप्लाई करना पड़ेगा, और लार्ज रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे तो ये जो जंक्शन है कलेक्टर टू बेस जंक्शन वो हमारा ब्रेक हो जाएगा और ट्रांजिस्टर बर्न आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर किसी काम में नहीं रहेगा, और उस रीजन को हम कहेंगे पंच थ्रू रीजन, जब बेस की इफेक्टिव विड्थ जीरो पे डिक्रीज हो जाएगी और वेरी लार्ज करंट विल फ्लो। तो ये जो वेरिएशंस हो रहे हैं बेस के विड्थ में, जो वेरिएशंस हो रहे हैं उसे हम कहते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, और इसी को हम कहेंगे अर्ली इफेक्ट। दूसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे इनपुट में। तो एक होता है डीसी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वोल्टेज अपॉन करंट। तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग ले लेंगे, सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग देख लेंगे कितना वोल्टेज है और कितना करंट है। तो ये वोल्टेज बाय ये करंट, वोल्टेज बाय करंट, दैट इज द डीसी रेजिस्टेंस। अब मुझे एसी रेजिस्टेंस मेजर करना है, चेंज इन एमिटर टू बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन द एमिटर करंट। तो ये 2 पॉइंट लेना है हमें, कोई भी 2 पॉइंट, ऐसे 90 डिग्री के पॉइंट्स बनाना है। इस पॉइंट पे कितना करंट है, इस पॉइंट पे कितना करंट है, और इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है। ये से पॉइंट्स हमें ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज और करंट, इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज एंड करंट, दोनों का डिफरेंस। हम इसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे यहाँ पे। आर आई ए सी इज इक्वल्स टू, सपोज ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो 2 वाला पॉइंट वी ई बी 2 माइनस वी ई बी 1 डिवाइडेड बाय डेल आई ई है, तो आई ई 2 माइनस आई ई 1। तो इस फॉर्मूले का इक्विवेलेंट ये फॉर्मूला। So this is all about the input characteristics. In the same way, now we have to plot the output characteristics. So I will draw very fast the output characteristics. So output characteristics,